So production is the center of the entire business organization. Production planning and control, it is a very, very important function for each and every organization. Because why we are starting up a business? We are starting up a business to sell the goods and services. Okay, when we say goods or when we say service, both the things need to be produced, isn't it? So the proper production and the planning for production, and after that the execution of production, that means the sale of the production, is very, very important. Now, what is the definition of production planning and control? According to Alford and Brettin, production planning and control comprises the planning, routining, scheduling, dispatching, and follow-up. These 5 things you will have to keep in mind. What are these? What is production planning? Planning, routining, scheduling, dispatching, and follow-up of the functions in the production process. Whatever production process are there, because every goods, every services has their own different production processes, isn't it? So organized that movements of materials are directed and coordinated as to quantity, quality, time and place. क्या समझा रहा है बेसिकली ये कि जब हम प्लानिंग करते हैं, when we plan, स्पेशली जब हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे तो उसमें हमें क्या करना है? फर्स्ट वी विल हैव टू प्लान, देन वी विल हैव टू रूटीन, देन शेड्यूल, डिस्पैच और फॉलो अप. ठीक है, क्यों करना है ये 5 चीजें हमें? सो दैट कि हम लोग प्रॉपर गुड्स ऑर्गेनाइज कर सके एंड विद द गुड क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम, प्लेस. क्योंकि प्रोडक्शन अगर एक्सेस है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन अगर अंडर डिमांड है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है. So that is the reason we should have the proper production planning as well as proper production control. Not only the planning is required, but yes, controlling is also required. So production planning and control is concerned with the planning and controlling of production activities. In one line, what it is production planning and controlling is concerned with the planning and controlling production activities. ये पूरा प्रोसीजर है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल का. ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू. We have seen many of you want to do a business, but still you don't know what exactly are you going to do and how are you going to start up with. See, for a business, what is required? We required a product or a service. What we required? A product or a service. So पहले आपका clear होना चाहिए whether I am going to start up my business in a product line, whether I am going to sell a product, or whether I am going to provide services. So these 2 parts should be clear first. Now, if we say product, then which product am I going to sell? Okay. If I say service, which services I am going to provide? ठीक है, अब हम प्रोडक्ट में आते पहले. सो व्हेन वी से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस प्रोडक्शन. क्या आप फिनिश गुड्स में डील करोगे? क्या आप रॉ मटेरियल्स में डील करोगे? व्हाट बेसिकली यू विल बी स्टार्टिंग अप. अगर आप फिनिश फॉर्म में डील करते हो, सो उसका प्रोडक्शन कैसे होगा? व्हाट आर द इक्विपमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड? व्हाट इज द टाइम? सो दैट इज व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन प्लानिंग. Okay, so what is the main objective of production planning and control? Number 1 is continuous flow of production. What we require when we will be starting up a business, the production should be on continuous basis. Okay, because neither the production can be too high nor the production can be too low. Why? अगर हमने ज्यादा goods produce कर लिया and if the demand of the goods changes in the market, if the taste and preference of the customer changes in the market, the stock will be a loss for you. If you are producing low, that means demand ज़्यादा है और आपका production कम है, तो क्या होगा? Your customers will switch to the competitors' product.
because you are not able to provide them the goods. So the production should be on continuous basis. Neither it should be too high, neither it should be too low. तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए हमें मार्केट से रिलेट करना है. We should be going parallel with the sales department. ओके, सेल्स पे काउंट रखना है हमें कि सेल्स कितना होना चाहिए. नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी. ऐसा नहीं कि आपके पास इक्विपमेंट है और वो मशीन एक दिन में 1000 गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है, बट आप उसमें से सिर्फ 500 का प्रोडक्शन निकाल रहे हो. देन ऑल्सो इट विल बी अ लॉस फॉर यू, बिकॉज क्या होगा कि उतना पावर में आप डबल काम करोगे. So whatever plant, whatever equipments that are available with you, you should use maximum. Next, estimate of resources. For production, what you need the estimate. कितना प्रोडक्शन होगा, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसके लिए. What are the, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सपोज आपको 100 शर्ट्स बनाना है, तो उस 100 शर्ट्स के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल्स चाहिए, कितनी मशीन्स चाहिए, कितने लेबर्स चाहिए और कितना टाइम. अगर आप बोलोगे मैं एक 100 शर्ट्स एक मंथ में रेडी करूंगी, सो बाय द टाइम वो मार्केट में आएगा शायद आउट ऑफ फैशन हो जाएगा. सो ये बहुत जरूरी है, estimation of your resources as well as your scheduling. Then minimizing of wastage. Wastage should be minimized. जितना कम मिनिमाइज करोगे उतना ज्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, बिकॉज द लेस विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Your inventory, your raw materials should be minutely calculated, that you're not wasting any, that means 10% of your materials, तो जाके आप गेन कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल अगेन, वी एंड यू आर नॉट द स्पेशलिस्ट. अगर वो 100 शर्ट्स हमें बनाने देंगे तो हम उसका कटिंग, उसका स्टिचिंग शायद हम खराब कर दें, या हमें आइडिया नहीं है कहाँ से काटना, तो हम लोग वेस्ट ज्यादा कर देंगे. सेम चीज इफ वी गिव टू अ टेलर, टेलर को सारी टेक्निक्स पता है, सो टेलर विल बी कटिंग इन अ प्रॉपर मैनर, है ना, वो वेस्टेज मिनिमाइज कर देगा, हम नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, the other most important thing is required is your teamwork. When we say business, when we say production, when we say planning, it requires a good teamwork. The human resource is your major tool in your business. अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स, आपका टीम वर्क अच्छा है, then the people will work you in a very very efficient manner. उनकी efficiency खुद ब खुद increase हो जाएगी. They will be motivated. Because you people are working in a team. Business, always keep in mind, not a single man show. It is not at all a single man show. Or if you're working somewhere, then also it is not, any organization is not a single man show. What we required a good teamwork, a good formation. Okay, here egoistic people cannot work. अगर आपको किसी से ईगो है, आप उससे बात नहीं करोगे, these things will not work in your organization, in your businesses. There should be proper coordination among your departments. Then only you will be working ahead. Achieve goals. The other objective of production planning is to achieve the goals. What is the goal that has been set by our organization? Whether those 100 shirts should be ready in a 15 days, or those shirts should be ready in 20 days or 10 days. 10 days be possible, hai? 10 into 10. So that goal should be achieved.
Next is improvement of labor productivity. What we require is, as I said, human resource are the major resources of the organization. So their productivity should be improved. प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी. जब लेबर प्रोडक्टिव रहेंगे तो आपका प्रोडक्शन ऑन टाइम होगा. फॉर दैट यू शुड प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉइज. You should proper you should give proper appraisal to your employees. You should reward them. तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. If I am giving you incentives कि ठीक है एक दिन में 10 शर्ट का आपका ड्यूटी है, लेकिन 11th शर्ट अगर आप रेडी करते हो तो वो 1 शर्ट का आपको इंसेंटिव मिलेगा. सो पीपल विल वर्क मोर एफिशिएंटली. ठीक है, अगर मैंने एक भी एक्स्ट्रा किया तो मुझे उसका इंसेंटिव मिलेगा. इफ आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग तो मैं अपने टाइम से ज्यादा काम क्यों करूं, अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम क्यों करूं, isn't it? So we should improve this labor productivity. Efficient services to the customers. We should also provide efficient service to our customers, because customers are the one who will be purchasing our goods, who will be buying our goods or services. So quick and efficient services should be given to our customers. Delay jitna karoge utna kya hoga? Customers will switch to the competitors. Then facilitating quality improvement. Always we should provide a quality goods, a quality services to our customers, so that we can retain our customers, so that the customers will have loyalty in you. So this is what are the objectives of your production planning and production control.